StrategyOne. We will basically talk about some strategies that we have as quadrants and किस तरह की strategies हैं. ये introduction हम लोग बार बार देते रहेंगे because हम लोगों ने अपनी strategies को एक किसी nomenclature में classify करा हुआ है. So there are gamma strategies which are buying strategies. There are theta strategies which are triangles, straddles, whatever you can call them, mostly non-directional strategies which will have limited counters, and there will be multiple counter strategies as well. There are zeta strategies which are positional, intraday positional and directional selling. And then there will be delta strategies which are positional futures or intraday cash strategies. We will introduce different strategies at different time. Right now, we're talking about Zeta Index Positional Seller. We call it ZIP as a strategy, name. Basically, this is a positional spread. Either it will buy a call spread or a put spread, depending upon a direction. Buy and sell, basically. The spread is always buy and sell. So there's a 100-point spread, 1000-point spread in Bank Nifty. There's a 600-point spread in Nifty. So if we are selling a call in Nifty, if it is 17,200 call that we are selling, 17,800 is what we will buy back for a margin plus, let's say, Black Swan event protection. It is a single counter for a week. Ideally, we gain from the delta moves and the inherent theta decay. Theta decay is a smaller part of the strategy. More is on the delta part. When the move happens, we will gain more. Theta will add to that gain, but we are looking at capturing a move in essence. When do we start? We start every time. We start on 9:30 on a Friday. It is not necessary that it will trade at that time. वो बाद में भी ट्रेड कर सकता है, पहले भी ट्रेड कर सकता है, हो सकता है फ्राइडे को नहीं भी ट्रेड करे. एंड हम लोग किस दिन एंड करते हैं? हम एक्सपायरी के दिन पे एंड करेंगे at 2 o'clock. Beyond that, we will not get into the trade. We will have multiple entries during the week. On an average, backtest के हिसाब से 250 ट्रेड्स होते हैं. हमारा SL और टारगेट मैक्सिमम SL जो है वो 40% तक है ऑफ द सोल्ड लेग. जो उसका जनरल रेंज है 20 to 40%. देयर आर अदर पैरामीटर्स दैट आर देयर, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज के व्हाट पैरामीटर्स वी यूज टू डिसाइड कि अभी कटना है कि नहीं कटना है. दैट इज पार्ट ऑफ द कोर लॉजिक ऑफ द स्ट्रेटजी. टारगेट जो है वो 65% है. अगेन उसमें भी देयर इज अ 30 to 65% का बुकिंग होता है. और लेट्स से इफ वी डू अ गैप डाउन and we have expected the gap down correctly, it will be even more than 65%, and vice versa. If there's a gap down but we were bullish and the risk kicks in, there'll be a loss more than that. However, this is the loss on the leg. There'll be a gain from the buy side as well, which is not considered here. So as such, strategy mein there's no fixed stop loss, there's no fixed target, but we are managing the legs that we are taking. We are managing each and every trade that we are taking. So what is a risk profile? Risk profile is medium risk due to the nature, because it's a spread, directional hai, overnight risk hai. So it is medium risk, and you have to consider that when you do just 1 second, please. Just 1 second. Yeah, sorry. So it may do let's say SL which is higher, or a target which is lower, depending upon what may happen with the positions. When we look into the capital, ideally with Bank Nifty and Nifty, because it takes both the spreads at the same time, it might not take all the spreads at the same time, but it will choose which one to take. Maximum margin that will go is 80K, while we expect a buffer of 20K to be there, which should take care of some of the drawdown that is there, or most of the drawdown that is there. Yeah, someone is asking a question. Aditya. Aditya, you can unmute yourself. I saw your raised hand. You can unmute yourself and ask the question.
What you mean to say by there is no SL? Okay, so there's no strategy wide SL. The SL is on the traded legs that we do. So it will So not be case what is the max drawdown in a day? max drawdown in a day. If we look into it, it can go to 4 to 5% as well. That's what it can do as well. But when we look into the strategy in itself, it is a positional strategy. You don't look into a positional strategy by a performance on a single day. And what have been the number of max drawdown days in the backtest? We will share that information to you, on that, on the StrategyOne group. Okay. Ideally, it is very difficult to calculate that from the backtests that are available on TT, because the PNL is not like on a strategy which is जहाँ पे हम लोग डेली क्लोज नहीं करते हैं, तो उस पर डेली PNL नहीं मिल सकता. तो आपको ग्राफ से ही समझना पड़ेगा, ग्राफ से ही वो PNL दिखेगा. और जो ड्रॉडाउन बैकटेस्ट में दिख रहा है, that drawdown is basis considering the PNL high, and then what is the PNL low at the end of the day. Yeah, okay, but then you'll have a max drawdown also, na, saying that okay, this was the max drawdown. So let's say, for example, As per the backtest, the max drawdown that has gone is 20%. No, correct. Okay, so that's what you're saying. It can go to 20%. So let's say, for example, like 4-5 days, unfortunately, it hits the SL, then we can have a max 20% drawdown. Right? Yeah. Oh. Can I go ahead? Yeah. Okay. Right. So ये strategy का basis हुआ कोई. अच्छा, Ranjan has raised his hand. Yes, Ranjan. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. हेलो. हाँ जी. कैसे? हाँ जी सर. सर ये जैसे आपने बताया पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, तो इसमें 20% तक मैक्स ड्रॉडाउन जाएगा. तो ये वीकली में हम लोग पोजीशन लेते हैं, राइट? हाँ जी. हाँ जी. तो सर ये क्या वीकली टू वीकली क्लोज होगी, या मतलब वो एडजस्ट करेगी स्ट्रैटेजी खुद को? तो अगर मान लो आप एसएल हिट होता है तो वो एग्जिट कर जाएगी. सपोज हमने फ्राइडे को स्ट्रैटेजी में एंटर किया या थर्सडे को एंटर किया, राइट? या फ्राइडे को एंटर किया और ये मंडे को एसएल हिट हो जाती है, तो क्या री एंटर करेगी फिर मंडे को, या फिर ये वेट करेगी फ्राइडे तक का? नहीं, वही मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा था. ये स्ट्रैटेजी फ्राइडे टू थर्सडे काम करती है. तो फ्राइडे को एंटर करेगी, थर्सडे को एग्जिट करेगी उस वीक के ऑप्शंस में. अगर बीच में कभी स्ट्रैटेजी ने एसएल हिट किया तो वो लेग वाइज एसएल होगा. दैट मींस कि स्ट्रैटेजी डीएक्टिवेट नहीं होगी या यूनिवर्सल एग्जिट नहीं होगा, उस लेग का एग्जिट होगा. अच्छा, मतलब स्ट्रैटेजी पे. हाँ, सॉरी, प्लीज गो अहेड. हाँ, मतलब स्ट्रैटेजी पे जैसे मान लो आप बता रहे हो कि है 5,000 6,000 जो भी एक एसएल सेट है, तो अगर वो एसएल हिट होता है मंडे को सपोज, पूरी स्ट्रैटेजी पे नहीं है एसएल, या लेग वाइज एसएल ही है केवल इस पे? इसके ऊपर लेग वाइज एसएल है. अगर सपोज हमने निफ्टी का जो स्ट्राइक है जो बेचा है 17,200 का स्ट्राइक, अगर हम लोगों ने बेचा है, कॉल बेचा है, और उसका प्रीमियम है 150 रुपीज, उसका एसएल जो है 150 रुपीज के ऊपर 40%. ठीक है. ठीक है, वो हुआ अप्रोक्सीमेटली 60 रुपीज. तो 60 रुपीज का एसएल है, वो लगा एसएल, तो एग्जिट हो जाएगा. तो उसमें लॉस 60 रुपीज नहीं होगा, क्योंकि जो बॉट गेन होगी ना, बॉट स्ट्राइक होगा ना, उसमें भी गेन आएगा. So net loss probably will be 35, or depending upon the date, it might be 30, it might be 38 as well. ठीक है. और वो अगर एसएल हिट हुआ, उसके बाद अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होता उसका पुट बेचने का, तो इट विल नॉट ट्रेड. सो वी डोंट डू कंपल्सिव ट्रेड्स. वी डोंट डू के अगर डायरेक्शन अभी चेंज हो गया तो अभी हम लोग इमीडिएटली चेंज हो जाएंगे. वी विल वेट फॉर द पैरामीटर्स टू टेल अस दैट हाँ डायरेक्शन कंफर्म्ड है कि नहीं. अच्छा, इन वन सेंस. ठीक है सर. ठीक है सर. राइट. सो ये चीज स्ट्रेटेजी का मतलब बेसिक है कि हम लोग डायरेक्शन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं,
थीटा डीके उसके साथ आ रहा है, हमको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है उसका, बट आइडियली हम लोग डायरेक्शन के ऊपर ही ये कंसंट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है सर, प्लीज गो अहेड। ठीक है, ठीक है सर, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, सो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सो आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज द बैक टेस्ट। सो देयर वाज डिस्कशन के बैक टेस्ट में क्या आया है। सो दिस इज द बैक टेस्ट रिपोर्ट दैट वी हैव। 12 महीने की बैक टेस्ट रिपोर्ट निकाली है। 1 साल की निकाली थी पहले, बट उसमें बीच में अटक गई थी बैक टेस्ट, तो दैट इज रीजन व्हाई वी हैड टू डू दिस अगेन। वी विल बी रनिंग अनदर 24 months का बैक टेस्ट, as soon as that full result is available। टीटी में कई बार दिक्कत आ जाती है उसकी। तो अगर आप इसको देखोगे तो स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस मोर और लेस कंसिस्टेंट रहा है। आदित्य, लेट मी फर्स्ट फिनिश माय पॉइंट एंड देन I'll take questions please। So अगर स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो इट हैज बीन मोर और लेस कंसिस्टेंट, बट ऑफ कोर्स लाइक एनी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी देयर विल बी ड्रॉडाउन्स इन बिटवीन, देयर विल बी टारगेट्स इन बिटवीन, so that's something that we have to be aware of। Yes Aditya, I'll allow you to speak, you can unmute yourself। So what I'm asking is, so I got the point of the Excel and everything। आदित्य, आपका आवाज नहीं आ रहा अच्छे से। Now you can hear me? No, I can't hear you properly। Okay, you continue। I'll speak later। Your voice is echoing actually। Okay, I'll speak later, no issues। Aditya, post your message in the group so that we can take it from there। Okay, so I think till Aditya is posting his message, I'll continue with the presentation। So when we see more importantly, what we look into is how the trades are executing and how many trades are executing। So I would want you to look into this। On an average, there are about 150 to 300 trades। So this is the range of the trades। On an average, we are talking about 200 trades। When we say 200 trades, that actually means about 50 positions, because each and every trade is basically call and put, call and call bought and call sold। So there are 2 trades that go in each time, and then they'll be exited as well। So it is in one sense a very low trade strategy, right? Because it's also on both the indices। In our experience, what we have seen is low trade strategies are much better to handle slippage, because the less trades, the less slippage it would be, and they are much more having much more uniform P&Ls across deployments because of that। This is the current performance that we have। Just 1 minute, I think the video is paused। Okay, right। So this is the current performance that we have had in the last 3 weeks that we have run this strategy, and as you can see, it has been quite good। The Sharpe ratio has been much better than our expectation, and the drawdown has been around 4%, which basically kind of started with a good in a good way, and then had a little bit of drawdown। Yes, you want to speak? Yeah, you can unmute yourself, guys। I'll just request you to make sure that the questions are related to that particular slide, and I'll always give a pause so that we can look back into the slide। Can you hear Yes, me? yes, Can you hear me? yes, yes। Yeah, so my question is, when the let's say the strategy has cashed the trend, so Yeah, after depletion of 65% of the premium, will it take another position in the same direction? very good question। So what will happen is, if the trend remains and parameters are telling the strategy that the trend could continue without a significant pullback, it will take the trade again। Oh, okay. Otherwise, it will wait for the trade।
Okay. So Thanks. the idea is not to trade all the time. Do get it? I mean, I think that's what I want to explain, because there are Yeah. some other strategies that people try and do, that they are trading all the time. This is not a strategy which will trade all the time. It will make sure that it trades when the probabilities are very, very high. Yeah. Some strategies in the marketplace are like they remain in the trade all the time. Yeah, so I mean, I'll give a maybe not a related answer, in a different way altogether. In a positional strategy, we are trying to catch a position. If you want to catch theta decay, it's better to do a non-directional strategy, which will actually give you, which is basically designed to do a theta decay. So how we go about it is, in my personal deployment as well, in our personal deployments as well, we will have zip. We will also have a non-directional strategy, intraday non-directional strategy, which will capture the theta decay, which happens during the day. Yeah. So it's not necessary that all the capital that you have you will put in one strategy. You'll have to divide this, among different strategy. If you have low capital, you want to run only one strategy, then zip is not for you, because it is not a strategy which comes in with something like a protection in that sense. Most of the non-directional strategies that you talk about, which are intraday, there's no overnight risk in that, and there's no way to cover any overnight risk with any strategy. Those Yeah. non-directional strategies that you do intraday, most of them are paired as well. So when they are paired, there's a call sold and there's a put sold. तो वहां पे एक protection already रहता है in that sense. In a directional strategy, you cannot do that. And what is the protection here? How much points far away we are buying the option to protect, to hedge? Yeah. So in Bank Nifty, it is 1,000 points. In Nifty, it is 600 points. Okay. So this is basically a black swan protection. Yeah. Okay. So I think a lot of people are deploying the strategy live as well. So, and they started deploying from last week. So they've seen very good returns as well on this. So I can, talk about it. So again, I think we have discussed this thing right now. What does it do? How does it work? It works on a breakout or breakdown. It will trade when there is a breakout or a breakdown. We use multiple indicators and price action to confirm the breakdown or breakout. Right? That's proprietary. We'll not go into detail on that. But the whole idea is that we are trying to catch a direction with highest probability possible. Of course, there will be times when we will be wrong, and there will be times that we will be very, very right, and that's how we make money. We are not eager to enter trade too soon, or nor are we eager to stay in the trade all the time. तो there's no point कि हम लोग को अच्छा डीके मिल गया और हम लोग उसमें टिके रहे हैं. या there's no point कि हम लोग उस टाइम पे या उस टाइम पर रुक रहे हैं जहां पे probability of bounce back or stability in the price is higher. So there are parameters that we use. It might not work sometimes. It might work sometimes के हम लोगों ने जहां पे exit करा उससे market थोड़ा और नीचे गया या थोड़ा market और ऊपर गया. But that's all part and parcel of the time. Most of the times, we'll be on the right side of it. Any questions? Vishal, there are some questions in the group. Could you please answer them? Okay. Can you please read out, because if I go from this window, then the presentation will stop. Okay, so Aditya is saying 1,000 points in Bank Nifty will give 25k loss. That's 25% loss. I fail to understand the logic. So I think Aditya, there is. I think let's see how the option works. So if we are saying that we enter, 3,700 call we have sold, and then 38,000 call we have bought. So there's a 1,000 point spread that is there. If Bank Nifty, because we sold call, so Bank Nifty opens at 38,000. The call that we have sold, if we would have sold at 300, 400, 500 rupees, Bank Nifty currently it is 500 rupees. तो उसका price कहाँ जाएगा? 1200 रुपए, 1300 रुपए. It will not jump up by 1,000 rupees. Why? Because it becomes ITM.
एंड जो OTM ऑप्शन हम लोगों ने बेचा हुआ है उसके अगेंस्ट, it will become, instead of 100 200 rupees, it will become 400 500 rupees, it will become ATM. So how much have we lost in this process? About 700 points. With just 14,000 rupees, or not even 14,000 rupees. Sir, this is the strategy. If you feel that, I mean, Aditya has said, what is this nonsense? This is how the strategy is. If you feel that, you don't want to do any positional strategy, you don't want to have the protection like this, you're free not to do this trade. See, it's a risky strategy. I'm not saying this is your safe strategy. Deploy your entire capital in it. Don't do any other strategy except this strategy. I'm not saying this. This is a strategy for people who understand the risk. Yes, Wednesday, Thursday is an issue that would happen, but generally, again, the backtest is considering all that stuff. So we would not like to comment more on it. There are other things that we have planned for Wednesday, Thursday, but I would not want to discuss it right now. The essence of the discussion is to consider the current strategy. We have not talked about SL as 5%. SL is not 5%. So I mean, just wanted to make sure that we are discussing the right things here. Okay, so I don't think anyone has any questions on this, how this strategy works. Sudarshan, your friend was not able to join. Has we been able to join? You can raise your hand or reply on the chat. क्या कुछ इशू हुआ, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, टेलीग्राम का कुछ इशू लग रहा है. Okay, but we have a recording of this session, so I'm sure that it will be visible, और हम लोग उसके बाद भी questions लेंगे, right? Okay, so I think Aditya, I'm just putting it very clearly, Aditya. No disrespect, but the point is, this is not a safe strategy. This is not a strategy where you should feel that there'll be a 5% drawdown. We are not saying that. This is what the backtest is showing us. But we are saying that you should have considered 20% drawdown. We've already included that as part of the capital. And as a strategy, or let's say, it becomes a bit difficult to say it all the time. As a policy, any strategy of ours, if whatever the drawdown is real time, we add that as part of the capital. We don't run a strategy with that with that belief that के हम लोग low investment दिखाएंगे and low investment दिखाएंगे and उसको फिर we show high ROI. If tomorrow the strategy for any black swan event it has 30k drawdown, we will add the capital into it. That's a policy that we are having, because one thing that is very clear to us, we don't want people to have misunderstanding of the capital required and resulting into a trade loss because of that. Okay, so Aditya, I think you want to deploy a larger capital. We can have a separate discussion. We can discuss it separately, how to handle that, and your specific questions, and we'll see if we can incorporate that. Okay. Right. I'll go on to the next slide, please. So the limitations of this strategy. What we are talking about, we've been talking about right now. The risk is there. How does it work? See, basically, it will try and mitigate this risk in a few ways. One, although we have parameters to identify choppy markets, which will work 60 to 70% of the times, many times it might happen that it will fail in choppy markets. So it will not capture all the choppiness in the market.
बिकॉज जैसे हम लोगों ने बात करी कि ये ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि इसको अगर मतलब कॉल से पुट बेचने का जो सिग्नल मिला और इमीडिएटली उसने ले लिया, ये ऐसे नहीं होगा. It will wait for certain parameters to confirm it and then take a trade. It prioritizes booking gains versus staying long in the trade unnecessarily. So when we mean unnecessarily, it is based on certain parameters. अगर वो parameters दिखा रहे हैं कि there is a chance that the market will go up from here, or something different might happen, then it will remove get out of the trade. This really helps in volatile markets, and as we all know, since September, everything is started becoming very volatile. Jo Aditya was talking about, on expiry days, or closer to expiry, there could be a lot of erosion of profits or unforeseen losses. The hedge and spread does not work on expiry days. It will just become a margin reducer. So this is something that we want to understand as well. But generally, what happens on an expiry day, directional moves are not that common. And even if the directional moves are there, we will capture the directional move. So most of the times, this hazard is there, but we by default, because of how premiums behave on expiry, we should be okay with it. Any directional strategy will have higher risk. Drawdowns could be higher. We need to understand that directional strategies have to be used as a balance with intraday strategy. We are not saying just only deploy a certain portion of your capital. वो तो होना ही चाहिए कि if you have a capital of 10 lakhs, you should put 4 or 5 lakhs into active trading. And even that, when you do, of that 70% should be intraday strategies. Rest should be a direction strategy till the time you're comfortable with it. I mean, there might be some people who will be comfortable with the direction strategies and they would want to run only direction strategies, but we don't recommend that to start with. As you grow your capital, as you gain experience with the strategy, as you gain experience in the market, you can take a call on that. There are intraday strategies that we have as well, which are giving significantly higher returns at lower trades. So, you can use a combination of those strategies. Yes, your Tradetron cost will be higher, but I think before that, you should look into your capital preservation and how you can make sure your capital is safely allocated. Any questions on this? I don't see any hand raised, so I'll go back to the presentation and just complete some of the questions that we got. So there was quite a few questions, but we basically added questions which were not directly answered, or there needs to be some more explanation on those questions. There was a question where, while I see a lot of similar strategies, if not exact copies of SO strategies, what is the differentiation? So there are there are things that we talked about. We are trying to make strategies which are optimized for risk and return. We will keep the number of trades in mind. If the trades are higher, then that strategy is supposed to give you higher returns, and that's the whole idea behind it. We will most likely have strategies which will, you will see that as well, which will have lower end of the trades, because again, we believe that any directional or a non-directional strategy should have some sort of a cooling off period once they have booked profits or once they have booked losses, and these are done via parameters which are time tested. I will not go into again detail on that, but this is the philosophy behind StrategyOne. For someone who is very new to StrategyOne, what would you suggest for newcomers? What is the ideal combination? So again, I talked about it briefly. Someone below capital of 5 lakhs should avoid directional strategies completely. I'm giving an answer in relation to ZIP. Anyone who has got more than 5 lakhs, they should do a 70-30 ratio of intraday, non-directional and directional strategies. You're free to choose any strategy that you want, you're comfortable with. See, strategies, as we believe, is more about how comfortable you are with M2M swings. So that is something that you need to look into. What is the profit sharing plan after April? See, we are not, saying that April will be the day, but we will look into, most likely our plan is April.
it could extend as well, because again we want to promote our strategy. This is a promotional waiver that we have done, but we will keep a nominal 7.5% of gross profit. That's across all Zeta or directional selling strategies. There will be a 7.5% return, profit sharing on the return that you generate. Any more questions? रंजन? हाय, तो मैं अभी इसका बैक टेस्ट देख रहा था. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द बैक टेस्ट रिपोर्ट ऑफ दिस जीप. सो इट्स वेरी Sorry? quite I was going through the back test report of Zip. हाँ जी. It is quite high, like returns are quite like phenomenal, like 20%, and on an average, like if you go through it, so it has crossed for 6 months, it has crossed 100%, like 155% of return. It is showing on the back test. So जो like how it will vary in live, like back test में भी, क्योंकि क्या है कि ये पोजिशनल स्ट्रेटजी है, तो आई बिलीव कि जो स्लिपेजेस का रोल है वो बहुत कम हो जाता है पोजिशनल में. आप सही बात बोल रहे हैं, और एक्चुअली वही चीज है कि अगर आप अगर आप बोल रहे हो कि बैक टेस्ट में आपको रिजल्ट अच्छा दिखा है, तो फरवरी में मार्च में हम लोगों ने 9 मार्च से ट्रेड करना शुरू करा है. फुल मार्च का जो हम लोगों ने बीटी करा हुआ है, दैट इज टॉकिंग अबाउट अ 50% रिटर्न, जिसमें से हाफ रिटर्न केम इन द फर्स्ट 9 days ऑफ मार्च. हम लोगों ने 9 मार्च से शुरू करा है. लाइव रिटर्न इज 35%. 35%. दैट इज व्हाट, लाइक क्योंकि क्या है कि पोजिशनल में एज फॉर माई मैनुअल एक्सपीरियंस, आई डू मैनुअल ट्रेड्स, लाइक आई एम न्यू इनटू एल्गो, बट आई वाज डूइंग प्रीटी लाइक बहुत टाइम से मैनुअल कर रहा हूँ. तो आई हैव फील लाइक आपका जो स्लिपेज का रोल है और मेनी अदर फैक्टर्स कम्स डाउन इन दिस व्हेन यू कम टू पोजिशनल ट्रेड्स. सो यहाँ पे फिर वाई आर यू सेइंग दैट इट इज रिस्की? सर बिकॉज ये चीज सर मैं कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ. देखिएगा सर कि आप जैसे 20% का ड्रॉडाउन इज लाइक इफ इट इज श्योर, लाइक वी आर श्योर अबाउट आवर स्ट्रैटेजी एंड वी आर गोइंग थ्रू द बैक टेस्ट डेटा, और इट इज गिविंग अ 155% ऑफ रिटर्न विद इन 6 months ऑफ टाइम ऑन द बैक टेस्ट, एंड यू सेइंग दैट मार्च में लाइव डिप्लॉयमेंट पे भी 35% का रिटर्न है. देन हाउ इट बिकम्स रिस्की इफ लाइक इतना फिनोमिनल रिटर्न पे 20% का ड्रॉडाउन, तो दैट इज एक्सेप्टेबल. सर आई विल आस्क यू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. आपने एफएनओ ट्रेड करा है, और अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको कई बार आरएमएस के मैसेज आते हैं. राइट. आरएमएस के मैसेज आपको तभी आते हैं जब आप एफएनओ ट्रेड करते हो. हाँ, इक्विटी करते हो उसमें नहीं आता. नहीं आता सर. रीजन व्हाई इज रिस्क बीइंग मैनेज्ड बाय ब्रोकर्स इन एफएनओ? एफएनओ इज अ लीवरेज प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट में हमेशा आपके पास लीवरेज रहता है. अगर किसी भी प्रोडक्ट में आपके पास लीवरेज है, उसमें आपका रिटर्न तो बढ़ ही रहा है, सिग्निफिकेंट रिस्क भी बढ़ रहा है. सो वी बिलीव इन कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, कि देयर इज अ रिस्क इन दिस स्ट्रेटजी. सो इफ समवन इज सेइंग कि यार नहीं आई विल गिव यू अ शॉर्ट रिटर्न, सो मतलब एफडी करो ना. नो, वी शुड डू एन एफडी, right? So the point here is that we are confident of the strategy. We are confident that it will give you good returns. It has given good returns, but the idea behind saying that it is a risky strategy is to make you alert of the risk, that there is a risk that 20% capital drawdown could be there if something changes, which is something that is not considered in the backtest. Let's say tomorrow there is a nuclear war that happens. हाँ हाँ, आई गेट दैट सर. मतलब मेरा जो एक प्राइमरी कंसर्न ये था ना कि आई एम नॉट टेलिंग दैट 20% का जो ड्रॉडाउन है दैट इज लाइक लीज ड्रॉडाउन, बट द रिटर्न काइंड ऑफ रिटर्न दैट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट, वो 20% का ड्रॉडाउन इज कंसिडरेबल. दैट इज वाई लाइक मतलब मैं रिस्क और रिवॉर्ड के रेशियो में आई एम टॉकिंग कि इट्स इफ इट इज लाइक उसके कंसर्न में है, देन अगेन यू आर मेंशनिंग इट इज रिस्की स्ट्रैटेजी. तो वो चीज मेरे पॉइंट मतलब दिमाग में आ रहा था कि व्हाई, लाइक हाउ. सर आई थिंक वो एक हर किसी का पर्सपेक्टिव भी होता है. मेरे लिए जो भी स्ट्रैटेजी में आपके पास सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन है, सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन मींस बियॉन्ड 5% का ड्रॉडाउन है, वो रिस्क है.
स्पेसिफिकली वो अगर इंट्राडे से पोजीशन में भी जाती है, पोजीशन में क्या हो रहा है, कल स्टॉक मार्केट बंद हो गया बिकॉज हम लोगों को कुछ जैसे रशिया में हुआ, स्टॉक मार्केट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि वहां पे लग गया ये, राइट? सो ये सब चीजें हो सकती हैं, एंड एज ट्रेडर्स वी नीड टू ऑल मैनेज। हाँ, नहीं, बट द पॉइंट इज व्हेन वी, आई एम नॉट बीइंग सिनिकल एंड आई एम नॉट सेइंग कि यार ऐसे ही होगा, बट व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग अ स्ट्रेटजी एज रिस्की, इट इज रिस्की once in a blue बिकॉज moon ऑफ तो द is ट्रेड। considered like if we go through a proper money management तो that is considered. Exactly, and that's what we say when we say that how you deploy. But when we talk about people deploying in strategies in a certain ratio, we all know that probably that doesn't happen. Not everyone goes by that advice. नहीं तो So, मेरा कंसर्न आप उम्मीद करता हूँ समझ गया होंगे कि मैं क्या मतलब आप सर मैं क्योंकि आपका कंसर्न समझ गया हूँ। हाँ, मैं आपको वही बोलता हूँ, आप हम जिस तरह के इंसान है वो भी समझ लीजिए। हम थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम थोड़े ओपन हैं इन चीजों के बारे में, एंड वी ट्राई एंड मेक श्योर दैट वी गिव द वर्स्ट केस सिनेरियो टू यू एज वेल। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में यू आर टेलिंग कि 20% का ड्रॉडाउन खींच सकती है ये दिखा है हम लोगों को बैक टेस्ट में, लेकिन सपोज कुछ हो जाता है विच इज समथिंग दैट हैज नॉट बीन विजिबल इन द बैक टेस्ट, राइट? तो क्या होगा? तो मैक्सिमम क्या है, हम लोगों ने स्प्रेड बेचा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, है ना? अच्छा, तो दैट इज वेयर द क्वेश्चन मीडियम रिस्क इज देयर। आई हैव अ स्ट्रेटजी which I've been using personally myself, which has had a drawdown of let's say 7 to 8%, which is a naked seller. Huh? It's a naked strategy. उसका drawdown, actual live drawdown is less than 8%. In fact, दिसंबर में हम लोगों ने उसको चेंज करा था, एंड उसका ड्रॉडाउन दिसंबर के बाद से only 3% का ड्रॉडाउन है. अच्छा, ग्रेट. But still I classify that as a very risky strategy because it is naked. ग्रेट सर. अच्छा, ये जो पोजीशनल है तो सर एक ही केस में ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, एंड व्हेन विक्स इज हाई और स्लिपेज वहाँ पे, या तो फिर आपका विद इन अ सेकेंड ऑफ टाइम आपका जो प्रीमियम है शूट कर जाए डबल. हाँ जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ जी, हेलो. हाँ जी, हाँ जी. मेरा ये कहना है कि सर ये इस टाइप की स्ट्रैटेजी में तभी जैसे पॉसिबल है कि मतलब उस टाइप का रिस्क, जबकि विक्स आपका इतना हाई हो कि विद इन सेकेंड और टू आपका जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट शूट कर जाए डबल या 50%, तो जब वो 70%. डबल होता है ना, तो जो हमारा स्प्रेड है उसमें भी चेंज आता है, एंड वी डोंट एग्जिट just because the premium has double. It is basis that rule that we talked about. प्रतीक, मैं आपका क्वेश्चन लूंगा. रंजन को जो क्वेश्चन से हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है सर. So I'll allow Pratik to speak. Please. Pratik, you can unmute yourself. Yeah. Hi, sir. Hi, Pratik. Sir, yeah. So basically, I am very new to Tradetron, and what I wanted to understand from you is how reliable is the backtesting tool which we have on Tradetron. Like I tried to backtest a few strategies, and they have so basically they take the candles on 1 minute from 1 minute to more like from 1 minute to we can go to 5 minutes or 10 minutes, but lower than 1 minute we cannot go. So if there are signals which we have to take, just like let's say if the price goes above the previous day high, so we have to wait for a minimum 1 minute for the signal to accept. So is your strategy also based on these kind of signals, that as soon as the price goes above previous day high or some other indicator, we should take a position, and the backtest would not really show the exact outcome of the strategy? Okay. So Pratik, your question is regarding Tradetron as a platform. So which is not exactly related to the strategy, but then
The question is that how the strategy is behaving in the environment that the Tradetron has, right? So let me first answer the first part, which is the Tradetron ka jo backtest ka engine hai. Like how reliable is the backtesting? Yeah, I'll just put it out. See, there are many backtesting tools that you will have. If you are doing a backtest, that means you understand algo trading. There are many tools that you have, but Tradetron is the most complex of it. Most of the tools that you got available in StockMark and all that stuff, they also do minute-based candles. So Tradetron gives you that option. It gives you a 5-minute option. It gives you open price of the option, open price of the trade of the candle option, and the close price of the candle option as well. So as a let's say tool, it is very robust. Second thing that you talked about, you talked about spike coming in and some higher level coming in and then taking an entry. It depends upon strategy to strategy. What I can say about Zip is that it is not only that a price is broken that is looked into. There are many other parameters along with that that are looked into in case of when we talk about breakout and breakdown. So not all the parameters would show at that fraction of second if the trade if the trade is to be executed or not. It will take confirmation, and that's what we have built into the system. We are trying to do a confirmed trade. We are not trying to just enter a trade just for the sake of it because some spike has come in. That is not the intent. That is not how the strategy is designed to work. Okay, sure. Because what might happen is in a system like Tradetron, it's a very complex system, very complex engine, very complex, let's say strategies, calculations is done in Tradetron. तो क्या होगा कि एक स्पाइक पकड़ी किसी ने तो दूसरी स्पाइक किसी ने नहीं पकड़ी होगी. Correct. तो वो बहुत ही कॉमन है. तो there are scalping strategies that are there on Tradetron. They will have very significant difference with your live and auto and PT. What we try and do is create a system around it. So, we know the limitation, we'll try to create a system around it. And we'll make sure that, that system is working well in live and auto and PT as well. Okay, sure. Sir, जो दूसरी directional strategies हैं, वो भी same signal generation पे हैं, but instrument different है. Futures है, किसी में naked futures है, किसी में option selling है, किसी में 2 legs हैं, किसी में 3 legs हैं, but signal generation का algo is same for all of these strategies, is it? Yeah, so you're talking about our strategies, right? Yeah, your strategies. So थोड़ा difference है इसमें. When we talk about futures में मुझे डीके के लिए नहीं रुकना, राइट? अगर डीके हो रहा है फ्यूचर्स ऑप्शन, अगर डीके हो रहा है, बाय किया है, वो डीके हो रहा है, तो मुझे निकलना है वहां से. लेकिन फ्यूचर्स में वो डीके नहीं होगा, तो मुझे उसमें कंटिन्यू करना है. सो उसके लिए सेटिंग्स अलग रहती है. फ्यूचर्स में एक और चीज है हमारे पास, हमको पता है कि हम लोग उसमें ज्यादा देर तक रहते हैं ट्रेड में, तो उसके हिसाब से हम लोग बिकॉज डीके नहीं है, तो इट मेक्स सेंस टू स्टे स्ट्रॉन्गर इन द ट्रेड, लॉन्गर इन द ट्रेड, एंड वी change our parameters accordingly. We change our SL target trailing system accordingly. Same thing goes with option selling. So if I'm doing a naked option selling, it will behave very differently from a spread. So there are optimizations that we have done. We've been on Tradetron for 6 months. We have deployed our own capital for the 6 months, and we have optimized all these scenarios. बिकॉज क्या होता है मैनुअल ट्रेडिंग में, तो हम लोग देख के कर देते हैं एंड वी से कि अच्छा ये ऐसे होगा. ट्रेडट्रॉन में देयर वर नॉट मेनी डायरेक्शन स्ट्रेटजीज द मोमेंट वी जॉइंड एंड वी स्टार्टेड विद डायरेक्शन स्ट्रेटजीज. सो देयर वर लॉट ऑफ ऑप्टिमाइजेशंस दैट वी हैड टू डू टू मेक श्योर दैट ट्रेडट्रॉन से वो चीज चले without actually giving a negative correlation to the live versus BT. So there are adjustments that we had to do. And we have done that, and then after this, we are trying to come to you guys and talking about our strategies. In fact, I have one more slide of a strategy that is the mother strategy for Zip, जिसको हम लोगों ने 6 महीने से डिप्लॉय करके रखे हैं.
Okay. तो वो भी मैं Sure. बताऊंगा। Thank you, sir. रंजन, Thank you. ओके रंजन आप बोलिए, आपको मैंने हाँ जी। सर जैसे अभी आपने बोला कि हम मैनुअल में बहुत सारे पैरामीटर्स को देख लेते हैं, तो जैसे मैं मैनुअली जैसे कोई भी ट्रेड लेता हूँ, इंट्राडे हो या पोजिशनल, तो मैं कई बार सर एसएल हंटिंग को भी रिकॉग्नाइज कर पाता हूँ, कई बार मैं फेल हो जाता हूँ। तो माय प्राइमरी क्वेश्चन कि ये जो पोजिशनल में हम लोग है, तो ये एसएल हंटिंग वाला गेम क्या आप लोगों ने कुछ सिस्टम इसमें लगाया है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाए? क्योंकि ये तो मैं स्ट्रिक्ट एसएल। मैं आपको उसका आंसर अलग तरीके से दूंगा। मैंने ये हाँ नहीं जी सर। बोला कि मैनुअल में मतलब मैनुअल में बेटर है। व्हाट आई सेड इज कि जैसे हम लोग मैनुअल ट्रेडिंग में डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स हाँ देखते हाँ। हैं। अब हाँ, तो अब एक चीज है जो आप एसएल हंटिंग की बात कर रहे हो, यस इट्स अ वेरी वैलिड कंसर्न अबाउट एसएल हंटिंग एंड दैट विल हैपन अक्रॉस। बट दो चीजें, एक तो प्लेटफॉर्म की बात है। तो प्लेटफॉर्म जो हमारा है ट्रेडट्रॉन का, हम लोगों ने वहाँ पे चीज़ें अच्छे से इटरेट करके उनको कोड किया है, उनको ऑप्टिमाइज किया है, और बहुत डिफरेंट तरह के सिनारियोज कंसीडर करके एक स्ट्रेटजी बनाई है। जी। इस स्ट्रेटजी में जो एसएल्स हैं, अगर आपको एक ये पर्टिकुलर 40% का एसएल दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40% ही एसएल है। That is what I was concerned about. There are other things that are there in the strategy which determines the SL, which determines that when it should exit. So मतलब, और उसमें भी स्पाइक आ सकता है, उसमें भी SL hunting हो सकती है. But what we do is when we test this in different scenarios, so we have different let's say indicators to confirm that the breakout or breakdown or the spike or reversal is true or not. That we reduce that possibility. एंड बिकॉज इट्स अ सिस्टम दैट इज कोडेड, हम लोग अपना बायस को हटा के हम लोग उस सिस्टम को परफॉर्म करने का मौका देते हैं, जो टाइम एंड अगेन प्रूव हुआ है कि वो ज्यादा करेक्ट है, बिकॉज वहां पे इमोशन नहीं है। स्ट्रिक्ट 40% का एसएल रखना, तो ये तो क्या है कि बिग प्लेयर्स कैन इजीली कैच दैट एसएल। यू आल्सो नहीं, नो वो दैट सर, वी आर वो सिटिंग डिपेंड करता है ना कि वो कौन सी स्ट्राइक है, किसको पता है कि 40% हम लोगों ने किस टाइम पे एंटर करा है। दिस इज नॉट अ 920 स्ट्रैडल कि हम लोग 9:20 को ही एंटर कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का प्रीमियम एक ही हुआ, पूरी दुनिया का एंट्री एक ही हुआ, वो नहीं है यहाँ पे। मतलब एसएल खुद को मॉडिफाई करता है एज पर द सिचुएशन, दैट इज लाइक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप उसको एसएल अलग हंटिंग तरीके को से मॉडिफाई समझिए, करने का। आप उसको अलग तरीके से समझिए कि हमारे पास एक मैक्स एसएल भी है, और हमारे पास उसको काउंटर करने के लिए जो सिचुएशन होती है विद एसएल हंटिंग, उसको काउंटर करने के लिए वी हैव गॉट अदर पैरामीटर्स एज वेल। एंड बिकॉज एनीवेज इट्स अ स्प्रेड, अगर एक जैसे मतलब एक बहुत ही बड़ा कैंडल आ जाता है कि 1 मिनट में मतलब 5 मिनट में 500 पॉइंट का कैंडल आ गया बैंक निफ्टी में, तो जो हमारा बाय किया हुआ है कॉल, बिकॉज रिस्क विल इंक्रीज, तो वहां पे हमको गेन आएगा। तो वो बुक करके फिर दूसरा कर लेगा उसको। हाँ जी, दूसरा नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा पैरामीटर के ऊपर। अच्छा, इसमें जैसे कि आप कह रहे हो कि जैसे हम लोग आयरन फ्लाई में क्या करते हैं कि स्कैल्पिंग भी करते हैं, राइट? तो दिस इज काइंड ऑफ दैट कि हम लोग एक बाई साइड से स्कैल्प करके उसको पीछे कर देंगे। नो, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। हम लोग स्कैल्पिंग नहीं करेंगे, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था कि किस तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, बिकॉज प्रतीक वाज आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रेडट्रॉन, तो मैं उनको बता रहा था कि ऐसे होता है। दिस इज नॉट अ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। इट माइट बिहेव लाइक अ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी व्हेन आफ्टर एंट्री सडनली द पैरामीटर्स चेंज विथ सम प्राइस मूवमेंट, राइट? नहीं, मेरा अगेन मैं उस पैरामीटर्स पे, हाँ सॉरी, से मान लीजिए कि बाई साइड का अगर जैसे प्रॉफिट आ रहा है, मान लीजिए एक साइड लेस लॉस दे रही है, बाई साइड में हमारा अचानक से विक्स इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है, तो वो उसको बुक करके फिर बाई साइड को पीछे कर देगा या ऐसा कुछ करेगा क्या? दोनों को ही बुक करेगा वो। तो प्रॉफिट स्कैल्पिंग। अच्छा, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को हम लोग बुक करेंगे, प्रॉफिट या लॉस को बुक करेंगे। जैसे पैरामीटर चेंज हो रहा है, हम लोग प्रॉफिट या लॉस को बुक कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। पैरामीटर जैसे ही चेंज हो रहा है, हम लोग प्रॉफिट या लॉस को बुक करेंगे, डिपेंडिंग ऑन के शुड वी एंटर इनटू अ न्यू ट्रेड और नॉट इमीडिएटली। ठीक है, सो दैट्स द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव। मतलब हेजेस से भी प्रॉफिट बुक होता रहेगा। हाँ, देखिए, मतलब अगेन स्प्रेड वैसे ही काम करता है।
दुनिया भर के लोग स्प्रेड क्यों बेचते हैं? ये ऐसे ही काम करती है स्प्रेड। हाँ, राइट। ठीक ठीक है, ग्रेट। ओके। प्लीज गो अहेड। सुमित इज वांटिंग टू आस्क अ क्वेश्चन। सुमित, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। या विशाल, विशाल, इसमें एट अ टाइम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में पोजीशन रहती है ना? So, हाँ, it can take position in both the indices, but not necessarily. दोनों indices का behavior भी different होता है कई बार। अच्छा, I wanted to understand what is the max risk in the case of the black swan event. Sorry, max risk in the case of? Like अगर सर्किट डाउन या सर्किट अप होता है and we are against our position, so what is the max risk in that case? तो मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल बताया बैंक निफ्टी का, कि अगर 1000 पॉइंट्स अगर बैंक निफ्टी कल अगर हम लोगों ने कॉल बेचा हुआ है और उसके साथ एक स्प्रेड बेचा हुआ है 38,000 का, 37,000 का कॉल बेचा हुआ है, 38,000 का हम लोगों ने स्प्रेड बेचा हुआ है, तो खरीदा हुआ है, 38,000 का कॉल खरीदा हुआ है, सॉरी। तो उस केस में क्या होगा, अगर 1000 पॉइंट्स का गैप अप होता है हमारे अगेंस्ट, जो हम लोगों ने कॉल बेचा था वो 400 रुपए का अप्रोक्सीमेटली कॉल होगा एज ऑफ नाउ, राइट नाउ। तो 400 रुपए का कॉल होगा, वो हम लोगों ने बेचा, वो 400 का कॉल इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से 1200 चला जाएगा। यहाँ विक्स अगर ज्यादा होगा तो ये 1300 1400 चला जाएगा। जो 38,000 का जो कॉल हम लोगों ने खरीदा था वो एटीएम बन जाएगा, और वो जो 100-150 रुपया था वो 1200-1300 रुपया हो जाएगा। सो वी लूज अ स्प्रेड। स्प्रेड का मैक्सिमम लॉस हो सकता है 1000 पॉइंट्स, विच इज 25,000 रुपीज ऑन बैंक निफ्टी। निफ्टी में हम लोग जो स्प्रेड कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम लॉस अगर वो मतलब जीरो ही हो गया सब कुछ, मतलब हम लोग गैप अप ओपन हो रहे हैं और मार्केट में फीस लग गया, एक्सपायरी हो गई आज का आज ही और सब खत्म हो गया, ठीक है ना। उस केस में हमारा लॉस होगा 25,000 रुपए बैंक निफ्टी का, एंड अप्रोक्सीमेटली बिकॉज वी टॉक अबाउट 600 पॉइंट्स इन निफ्टी, that will be about 30,000. So 55,000 could be a max loss in that situation. All right, thank you. But वैसी सिचुएशन जनरली आएगी नहीं कि हम लोगों ने गैप अप खुला अगेंस्ट द ट्रेंड और हम लोग इमीडिएटली बंद हो गए। All right, thank you. Right. Deepak is asking question. Deepak, you can speak now. Thanks Vishal. So this is max जो situation आप बता रहे हैं, this is at 1x, हाँ? हाँ, 1x. Oh, thank you. But ये max नहीं है, I'm sure you understand. This is not a max. This is like जो spread का definition समझा रहा हूँ मैं एक तरीके से। अगर हम लोगों ने 1000 पॉइंट की स्प्रेड ली या 600 पॉइंट की स्प्रेड ली, उसका मतलब क्या है? Yeah, understood. And we are not hedging this at all, right? The only way we are is the only way to stop prevent loss for the losses is stop loss. No, so hedge is there in form of a spread. Hedge is there in form of a spread on a regular day. So regular day में जब नहीं होगा तो 1000 पॉइंट का लॉस नहीं होगा। Let's say regular day में कल का कल, let's say we have sold 37,000 call, we buy 38,000 का call, and Bank Nifty opens 38,000. So the loss would not be 1,000 points. It will be 600, 500, 700 points. Reason being because we have a spread that is there, and there is still intrinsic value that is there, or there is still a time value that will be there in the option. VIX will rise. जो Greeks हैं वो काम करेंगे, and the price will change accordingly, or price will increase accordingly. तो 700-800 पॉइंट का लॉस हो सकता है। ठीक है, so that's how it is. And then again ये सब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, but the other point is, if you look into the backtest, if you look into our other algos, we have a gap scalper as well. Generally, or 70 to 80% of the times, our algos are identifying the gap correctly till now, including this gap backtest. Sure.
And just one last thing, इसका BT डेटा आप कहीं पे एक्सेल में अगर डाल सकते हैं तो we would be able to check that, or how are you proposing we check it? Sir, not an Excel BT data. आप इसको पेपर ट्रेड करिए जब तक आपको कंफर्टेबल लग रहा हो. I don't think you should be in a hurry to deploy a strategy which is a risky strategy that I talk about. Medium risk strategy है. You should not be in a hurry to deploy that. You should look into the paper trade. लोगों का लाइव परफॉर्मेंस देखो. जिन लोगों को समझ आई ये स्ट्रेटेजी, जो इन तरह की स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय करते हैं मैनुअल में या एल्गो में, तो वो डिप्लॉय कर रहे हैं. मैं खुद डिप्लॉय कर रहा हूँ, मेरी टीम के लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, और काफी लोग जो यहाँ पे कॉल में हैं वो भी डिप्लॉय कर रहे हैं. तो हम देखेंगे, आप उसको देखिए, आप पेपर ट्रेड करिए. आप जब कंफर्टेबल हो M2M स्विंग के साथ, स्ट्रेटेजी के बिहेवियर के साथ, तो आपको डिप्लॉय करना चाहिए. Sure, thank you. Thanks. Any more questions? So no more questions. So I'm just going to the last slide that I have, which is the mother strategy. So this is Zeta 3, one of my highly used and consistent strategy that I've got in my portfolio, in my own deployment, in our own deployment as such. When we talk about the strategy, you can see this has been performing quite well across the period, the volatile period. It had a major change in December. We reduced the trades and we asked, made the strategy wait for taking the trade. And since then, it's been like a 45-degree line, which is a dream come true. In this period, the drawdown has not been more than 3%. This is a multi-leg strategy. इसकी ही सबसे प्रॉफिटेबल लेग को हम लोगों ने जिप पे डाला. इसमें 3 लेग हैं. इसकी जो सबसे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है उसको हम लोगों ने जिप में डाला है. The only idea of sharing this sheet to you is if people have doubts के कैसे बैकटेस्ट में परफॉर्म करेगी, कैसे परफॉर्म करेगी, तो this is a performance view of this strategy which is recorded by Tradetron. This is not a scalping strategy. इसका टारगेट 25,000 rupees है, SL 6,000 rupees है. So Tradetron has recorded each and everything. I think with this, our side of the presentation is done. We can take more questions, and we can help you out with any other thing that you want us to talk about. Is this mother strategy also available, Vishal? Yeah, it has been made private, Deepak. Idea is कि currently सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि अभी हम लोग uncertain time में हैं. तो even if it has given a very less drawdown, not a lot of people will be comfortable in selling naked options. So we have kept it as private. There is deployment from our side. There is deployment from other people as well. Few HNIs that are deploying our strategies as part of a portfolio. Thank you. Anyone else? Girish had a question. हेलो. हाँ जी रंजन बोलिए. ये सॉरी राजन सॉरी एक्सप्लेन कर देंगे सॉरी. जीटा 3 के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे. जीटा 3 के बारे में सर ये डिस्कशन जीटा 3 के बारे में नहीं है, बट मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ कि जीटा 3 इज अ मदर स्ट्रेटेजी जिसमें हम लोग 3 टाइम फ्रेम्स पे 3 डिफरेंट लेग्स एग्जीक्यूट करते हैं, और उसकी एक लेग को जो सबसे प्रॉफिटेबल लेग रही है उसकी इन दिस एंटायर पीरियड, वो लेग हम लोगों ने जिप में डाली है. एंड जिप इज द स्ट्रेटेजी दैट वी आर प्रमोटिंग बिकॉज of the inbuilt advantages that it has,
because of being a spread and thing against the black swan event. This is just to explain to you that there the strategy का performance जो भी आप देख रहे हो वो ऑलरेडी उससे बेटर परफॉर्मेंस दे चुकी है या वैसा परफॉर्मेंस दे चुकी है। संजीत, ये तो लाइव में भी आप लोग डिप्लॉय कर रखे होगे ना अपने? हाँ जी। संजीत, आपका क्वेश्चन था, मैंने आपको अनम्यूट करा है। संजीत, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। हाय विशाल। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, दिस इज ओनली psychologically related question, okay, because when you see the M2M losses, okay, so it's by human we are psychologically disturbed, okay, so we मतलब ना चाहते हुए भी कभी कभी हम लोग उसको मैनुअल इंटरवेन करते हैं, ठीक है, इट्स आवर ह्यूमन नेचर, सो हाउ टू ओवरकम इट? Hello. 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 Yeah, I'm saying easiest thing to do in that case is take time off from active trading. Do a lot of mock trades or paper trades. मतलब जब अगर कोई फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी होती है उसको फेस करने की, तो विराट कोहली स्पिनर को नहीं खेलता, वो नेट प्रैक्टिस करता है फास्ट बॉलर्स के साथ। पेपर ट्रेड में सर वो फीलिंग ही नहीं आता है, क्योंकि आई ट्राई। तो सर फिर तो यही हो सकता है कि अगर आपका कैपिटल कुछ है तो उसका बहुत ही छोटा अमाउंट लगाइए जो विच यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस, और अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है तो एज ऑफ नाउ अगेन हम लोग तो ये बोलते हैं किसी का कैपिटल अगर 5 लाख से नीचे है तो उसको तो एफएनओ सोच समझ के करना चाहिए, अगर समझ में आती है तो करना चाहिए, वरना डोंट ट्राई टू डू एफएनओ। एफएनओ में रिस्क है ही बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ लीवरेज थिंग, आप उसको कैरी नहीं कर सकते हो, नोशनल लॉस नहीं होता कुछ भी उसमें। इन्वेस्टमेंट में तो नोशनल लॉस होता है आपको डिविडेंड आता रहता है उससे, आपके पास ओनरशिप है उस कंपनी की, बट एफएनओ में ऐसा नहीं होता। नहीं, वो चीज मैं वो चीज समझ रहा हूँ। तो मैं और एक चीज नोटिस किया, जब मैं आपका ब्रोकर साइट ओपन करता हूँ तो मैं साइकोलॉजिकली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इफ आई डोंट ओपन इट रन्स एज इट इज, देन इट्स फाइन। मैं ये एक चीज फील किया हूँ, ठीक है। सर अगर आपके लिए ये काम करता है तो आप उसको करिए। हाँ, अगर M2M लॉस देख रहा हूँ तो मतलब एक इच्छा होता है हाँ उसको इंटरवेन करके बंद कर दो, बाद में देखते हैं, मतलब आई हैव अ प्रॉब्लम इन दैट। मतलब सर वो सबको होती है प्रॉब्लम, एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं तो वो सबको प्रॉब्लम होती है, एवरीवन हैज टू ओवरकम दिस इन अ सर्टेन वे। हाँ, तो ये चीज एंड मैं ये समझता हूँ कि सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आप या तो उसको मॉक ट्रेड करो, या दूसरी चीज आप स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करो, उस ट्रेड को समझने की कोशिश करो। हाँ, जैसे ये स्ट्रेटेजी में अभी समझने लगा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, तो उसको रन करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल सर। थैंक यू। Any more questions? Yes, Pratik, just 1 minute. मैंने आपको अनम्यूट करा है प्रतीक। सर कोई ब्रोकर टाई अप कोई आपका प्लान है क्या? सॉरी प्रतीक, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। ब्रोकर टाई अप एलिस ब्लू नहीं, हम लोगों का अभी किसी के साथ ब्रोकर अलायंस नहीं है, जब होगा हम बताएंगे आपको, बट हमारी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो कम ट्रेड में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा ट्रेड वाली स्ट्रेटजी होगी तो हम आपको पहले ही बता देंगे,
तो आप किसी भी ब्रोकर में एग्जीक्यूट करें, आपके ऊपर है। ओके बिकॉज मुझे अभी एक अपना नया ब्रोकर अकाउंट खोलना है, so I was thinking if there is already a tie-up, then maybe I can go ahead with that. प्रतीक, आपका आवाज क्रैक कर रहा था, तो मैं आपका क्वेश्चन तो समझ गया। तो कि टाइप की बात कर रहे हैं, तो हमारा कोई अभी तक कोई टाइप नहीं है, और जब होगा फ्यूचर में और उसके क्या होगा उसके रिलेटेड हम आपको बताएंगे। एज ऑफ नाउ कोई भी नहीं है। Okay, sir. Any more questions? मनीष, जस्ट 1 मिनट। हम लोग इसको कॉल को अगले 10 मिनट में एंड करेंगे, बिकॉज अगेन काफी टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली एक छोटी सी स्ट्रेटेजी को समझने के लिए। मनीष, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Hi Vishal, the presentation was Manish. good. Just wanted to understand, I'm new to your community channels. Just wanted to understand if you have similar recorded videos of your other strategies on YouTube or somewhere. I'm new to your channel, that's the reason I'm asking. Yeah. So Manish, yes, there are other recorded videos, but we are trying to, let's say, do a webinar with interaction with people just now. Before that, it was an overview of a strategy or overview of our StrategyOne as such. So you not missed much. Okay. So that's there. So the best way to start. Sorry, go ahead. And then you are on the group. We will keep posting about our strategies. We have also simplified and have only about 7 to 8 strategies that are there on public, and you will understand about these strategies via our interaction, and any questions that you have, we will be there to answer without any issues. We are planning another webinar next week on another strategy. We had put up a poll. I have yet to see the results of that poll. Once we see the results of that poll, then we will choose the strategy that has been chosen by most people for description next week. Sure. So just one thing, I mean, so I'm now 2 months old on the TT platform, so I'm pretty accustomed with the straddles. So what impresses me is the direction one and the strangles that you have. I think most of the creators are missing that. So probably if I have any queries, so I'll post it on the group. Sure, sir. You can post it on the group. I think if you talk to anyone, there are 4 of us, Vikrant, Dipanjan, and Krish. All 3 of them are on the group. I'll just put out my DM ID as well. You can reach out to any one of us. You will get the same level of information. It's just that I'm speaking right now, but all of us have the same level of information and probably more in-depth analysis of the strategies and how they behave. Sure. Thanks a lot. Thanks a lot, Vishal. You're welcome. So I'm proposing कि हम लोग इस कॉल को अभी एंड करेंगे, एंड हम लोग जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे फॉलो अप टू दिस डिस्कशन हम लेंगे, और ये जो वीडियो है हम लोग ग्रुप पे भी डालेंगे, एंड वील आल्सो पुट इट ऑन यूट्यूब. Any questions? Just last question now. Okay. So guys, one sincere request, before you are impressed about this strategy, first do a paper trade of this strategy on Tradetron. It is free to do paper trade. Any questions you have, any doubts you have, you can ask us. At the same time, if you're new to Tradetron, and because I have connected to some people who are outside Tradetron, and they are part of this call, so we are there to help you out as well with Tradetron में क्या होता है, कैसे होता है, and it's a very transparent platform as such. So whatever you see on Tradetron generally does happen, unless it's a error that has come in or something else. So but it's a very transparent platform in that sense. Okay,
Thanks a lot for joining on Sunday and on this Sunday, and I hope you all got the information that you needed. Have a good day. Bye.